नमस्ते, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग जहाँ पे भी आप लोग हो। हाय, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं क्रिस्टीना एवर्स, वॉइस ऑफ मानवता की तरफ से आज आपके सामने ही कुछ अद्भुत कहानी जो आपको इंस्पायर करे, stories that will inspire you of individuals, of their struggles, of their life, of their journey, how they are what they are today. So, Voice of Manavta News channel is basically the voice of the people of the entire world. This channel is not anyone's private channel, but it's for the public and it belongs to the public. So, anyone, regardless of the gender, regardless of the community, regardless of the caste, creed, we do not discriminate anyone on this particular channel. So, basically, what happens, we work as an uplifter and show the path of truth. That's why today we are talking on this channel. Today, our very first guest with us is none other than Candida Savior. Now, Candy, I have known her for many years. In fact, you can say I've known her for the last 35 to 40 years. As I mentioned, her name is Candida, and people with love call her Candy. Candy is a single mother, and for the past 18 years, she has brought up her two sons with the support of her parents. She is still working in a BPO in Salt Lake. Now, Candy is a fun-loving person and simple-minded yet determined when she sets out to do something. A strong individual, a strong female, and she's a very strong-willed person that can take on the world anytime given to her. I've known Candy, as I mentioned, for last so many years. And yes, as a single parent, it's not that easy to take care of your child. It's not that easy to face the world. There are failures more than success that you get. And we are here with Candy. So, Candy, would you please introduce yourself to our viewers? Wish them hi, hello, good evening, whatever. Introduce yourself and speak about your journey. Good evening, good morning, everyone around. Thank you, Christina, for inviting me to this forum. I am Candy, known as Candy, Candida Savior, single parent with two grown children. Now they're grown. When I decided to leave my home, my husband, they were very small at that time. Now they've grown up. But can you imagine the struggle? Deciding to leave, you're not compatible with your husband, leaving at that moment, deciding such a hard decision, and then leaving and without a job, without anything but the support of your parents. I'm thankful my parents supported me in this, and then working, trying to work, get back home, not giving enough time to your children that are very small, 9 and one was 9 and one was 5, both studying. Just think of how you're going to manage a night shift, come back, do stuff for them, take them to school, bring them back to struggles. But with all the struggles, I didn't find it, how do you say, like pulling me down. The struggles were my experience in life. It taught me to be strong. It taught me to value your family. It taught me to know who your friends are in this world. So yeah, I got an opportunity in BNK. Now it is on process. Thankful for that job that I had. No doubt I struggled, less time in the house, but money is the main factor to bring up your children. Where their schooling is concerned, and so many basic necessities there are, and being a single parent is not easy. But yeah, through my experience, I would like to tell all the parents out there, give your children the best of educations. If you don't have the means, reach out to someone that can guide you. And
And then children never to, always, if you're getting that opportunity to study, take that opportunity. We never got that opportunity. We worked, even when we were young, we had to step out and work at the very young age of 17. So we never had that kind of opportunity. So, even if you have a lot of struggle, still you can make them your strength with a sheer resilience. You can always overcome your difficulties. A little support from your family, from your friends can go a long way. 1 minute. Can we? Okay. Yeah, we all have muted us. We all have muted ourselves now. Tell me something, Candy. Fine, your parents supported you. Other than your parents, did you get any support from your friends or from the community where you live, where you work? How did the people treat you when they got to know that you are a single parent and you're supporting your own children with all your hard works? What are the downfalls and failures that you saw in your life? So, apart from only my parents being supportive and my family, I didn't think my friends were supportive. If you say friends, they're all abroad, they're all doing well, but when you try to reach out to them, there is no response. As soon as they see you're not chatting with them too much, then they try to avoid you for a certain amount of time, because they know that now she may ask for money, or she may ask for a job or something, so they try to avoid you. So my friends, I got to know who were my friends through my situation, through what situation I had. At work, I can't say at work I had any such problems, because at work we were all equals. And I'm talking about BNK. Okay, so Candy, did you ever feel low, because you're a single parent? Did you ever feel like giving up? And if you did, what were the challenges that you have faced, and what inspired you to be the person you are today? Oh yes, there was a time when I did give up, and it was like giving up. When you say giving up, it was like I almost tried to end my life, commit suicide. So, and there again, my parents were there. So, what inspired me is I just, when you have children, you think about more than thinking about your problems. You think about them, how you're going to take care of them, leave your life away. That's how it was for me. I'm always thinking about my children. What is there, I have to make their future. So they were kind of like my inspiration. Now I'm also, proud of where I am, because I gave them an education. Although the school that I took them to, St. Thomas's, they were a great help. One child I had to pay for, and one child was free. So I had some support through the school, but in school you always have to, it's not like it comes easy for you. You have to go that 10 steps beyond you. It's like charity. You're going, you have to go, you have to beg, you have to plead, you have to cry, and then you get that. It doesn't come easy for you. So for me, it wasn't easy. Getting my children, one child, a scholarship was not easy. I had to do what maybe some others also did the same thing, but that's what I had to do. I had to go. I was turned back, come again the next day. The person is not here. So it kept on for a couple of days till I finally met that person. And what I had to do was just fill up a form and take it to that Seva Kendra. It was like that. So there were challenges, but I overcame that. Because what is it? Yes, please go ahead. No, I was just saying there was challenges, but because I was, I didn't give up. So I kept pursuing what I wanted to do, what my children had to do. So here I am in front of you. So what is the message, if you would like to pass on a message to the entire world? Okay, there are many single parents who are still, who are still in their house. They don't want to come out. They don't want to deal with people.
because they are scared that how would the society treat them, or what would people say, because being a single parent, especially a single mother, the society does not look up to you with very good intentions or does not respect much. Okay, she's a single lady, maybe I can try my luck. That's what many of the people, especially men, they would think. So have you Yeah. ever encountered such things in life? Uh, no, maybe I was too engrossed in earning money and my children that I did not encounter that kind of thing. Maybe it was always there, but I did not notice it. But yeah, as like how you're saying, if you don't have a man in your life, people tend to take advantage. She's weak. They always tend to see your weak points because they always have that notion that women are weaker. I don't think women are weaker. Women are much more superior and stronger. They come out strong. We bear children. We look at we do juggle both things, office as well as home, housework, whatever, marketing. So I think women are much more superior. And you're saying, what is my message to the women? Don't think you're weak. Never think you're weak. Never think anyone can put you down. You are always strong. Just have to have a small little touch or maybe a small push towards your success. Even the children, take maybe take your parents' guidance. Um, I don't know what else to say. Like see for your instance, from where to where, Christina, you've come, right? So I've known you so many years, like all our childhood days. I'm much older than you, but yeah, we've grown up together almost practically. So I've seen from where we have grown up, from where we have come, from the place we have come to right now. Isn't that a big achievement? Yes, indeed, it is an achievement. Thank you so much, Candy, for coming, saying yes to sharing your stories online with people and inspiring many people in this world. I'm sure if they are not watching us today, they will watch us tomorrow, or they would watch us. Sam is trying to say hi to you. So they will watch us someday or the other. And Bhavika is saying hi to everyone. So, Candy, tell me something. What came into your mind when I approached you, to just come online for this particular show and speak about it? And do you think I should be having this show and calling people from different fields to share their story and inspire the world? What message would you like to give people about this show? What message would you like to give about people who are here? Because Sam out here. Sam is also an iconic person. Okay, Hi, making and Sam. she's made a lot of her own self-image in the industry, and she's famous because of her own hard work. So there are many who are struggling in this world, okay, who are not able to find their true self, who are not true to themselves, who are still not out of their comfort zone. So what would you like to tell those people? Firstly, when you asked me to come on this platform, I was thrilled. I thought I could make a little difference in inspiring someone with my story. There are hundreds of people. I think you're doing a great job. Maybe if you can invite more people, or maybe you can ask who wants to join in your Facebook page. You have a lot of people answering you. I think there'll be more stories and more. Maybe what I went through was not that. Maybe there's people having more difficulties than me. Coming from where they are. Maybe that will be more inspiring to the rest of the world, whoever's watching this. I feel honored that I'm here today. And like I said, I do not want women to feel that they are, weak. They should always think themselves strong. Because women, when they put their head into something, they make sure it happens. And they always say at work, the women are the most loyal.
Women are very loyal to their work, whatever field they are in. Loyalty comes first, and they're very determined. Hi, Sam. I'm At so the glad same to see you. time, at the same time, Candy, there are many men who are very supportive towards women, okay, towards the entire fraternity. There are many men who are still in their closet, who are single parent as well, single father. Like today only, I encountered someone who's looking out for a job, and he's a single father. And what is that one message that you would like to send across to these men in the world? A single father. I've never heard of a single father, but hats off to that single father, because he cannot take, we can take the place of a man to work and earn. But can you imagine a man taking a place of a woman? Taking a place of his wife as well as him. So that is like, something to uh, recognize, something to give, to be proud of. He should feel proud of being where he is. Not the thing that, his wife left him or he left his wife, but for the main reason his kids are with him and he's being able to look after and to, bring them up. The joy of bringing up your children, later you will know. Maybe now is the hard struggle, money wise, bringing them up and whatever it takes in bringing up your kids. But later when he sees the results, his kids are grown up, they're working. That joy, to experience that joy is something that I'm experiencing right now. I'm proud of where I am. My kids, one is working, Cruz is working, Crispus is on the verge of working. So when I look back, the struggle that I have right now, I feel I have accomplished something, and I'm proud of where I am. So yes, he should be proud, and he should take up that opportunity with a strong will. Come on, here comes the first time I've heard, but then take up that challenge. Life is a challenge and a struggle. Overcome it with whatever you have, resilience, perseverance, whatever you have. Give it all you have. You will get back 100-fold from life. So that was Candida Saviel, a strong, determined individual who has made her own name in this world today, who stands strong as a single mother and who does not want to give up in front of this world, who does not want to say a no. With an attitude of never giving up, she has brought up 2 sons all by herself with the help of her parents. And we salute a lady like Candida in this world who will inspire many more. There are many single mothers, single parents in this world who might right now somewhere would be listening to her story and will be getting inspired. Candy, thank you so much for staying with us, for connecting with us, for meeting each one of us and sharing your story and inspiring your story. If you ever have any question, Candy, if you want to get in touch with me, you know my number. If you've got me on Facebook, on social media, you can always get in touch. Thank you once again, Candy. So, thank you too for having me on this platform. So our next guest out here, it's none other than the one and only Bhavika Patel. Okay. Bhavika is basic, there's nothing that I could talk about Bhavika because she herself is a name in the market. People know about her. Bhavika is Asia and India's first transgender Cannes Glass Lions Film Festival award winner and Bollywood transgender actress. She's a singer, she's a model, she's a motivational speaker, a social activist. She won Best Actress Award from Z Mirchi Music. She's got even Z Mirchi Music Award, Mumbai Commissioner Award, and she's also a winner and a Guinness Book Record holder. So, Bhavika ji, welcome to this inspiring. Good evening everyone, and I'm really very sorry because मैंने पहले ही बोल दिया था कि मैं आज एक्चुअली शूटिंग के लिए बाहर हूँ
और कि कब पैकअप होगा वगैरह कुछ भी आइडिया नहीं था। एंड जस्ट अभी पैकअप हुआ मेरा और अभी मैं ट्रैवल कर रही हूँ। बट मैं बहुत खुश हूँ कि मैं ऐसे लोगों से मिल रही हूँ कि जो सच में इंस्पायरिंग है। और ये मीटिंग अगर लाइव मतलब अगर फेस टू फेस होती या कहीं किसी चैनल के लिए होती तो और भी मजा आ जाता। लेकिन हम लाइव मिल रहे हैं, कभी ना कभी हम पर्सनली मिलेंगे और कुछ नया प्रोजेक्ट करने की सोचेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू क्रिस्टीना एंड एवरीवन। तो भाविका, आपकी जर्नी कैसे रही? आप अभी ट्रैवल कर रहे हो, हम समझ सकते हैं, लेकिन आप अगर हमें छोटी सी ही मतलब शॉर्ट में ही अपनी स्टोरी के बारे में बताएं, कैसे आपने मुश्किलें झेले? जैसे आप मुझसे शेयर किए थे फोन पे, आपको क्लास 10 स्टैंडर्ड में ही पता चल गया था आपके बारे में, और आपकी एक विल पावर थी कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, यस मैं ये। यस 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 एग्जैक्टली। क्रिस्टीना क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल खुद को खुद एक्सेप्ट करो। दुनिया कब करनी है वो कर लेगी, लेकिन खुद को खुद एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। जब तुम खुद को एक्सेप्ट करोगे और तब एक हिम्मत आ जाएगी आपके अंदर कि नहीं, मैं जो हूँ वो हूँ और मुझे अब मैंने खुद को एक्सेप्ट कर लिया है, अब मुझे लड़ना है। और उस लड़ने के लिए ताकत खुद ब खुद आ जाती है, रास्ते निकल जाते हैं। सो मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मैं खुद को एज ऑफ 5 मतलब मैं 5 साल की रहूंगी तब से खुद को बहुत अच्छे से जानती हूँ या पहचानती हूँ। बस खुद को एक्सप्रेस करना मुश्किल हो रहा था। अ, और बहुत ज्यादा अमीर भी नहीं कह सकती हूँ, मिडिल क्लास फैमिली, बट रेप्यूटेड फैमिली, मराठी फैमिली से मैं बिलोंग करती थी। तो बहुत बड़ी फैमिली, घर पे मेरी माँ करते, समाज समाज क्या कहेगा, इसलिए मेरे माँ बाप हमेशा टेंशन में रहते थे या मुझे दबाने की कोशिश करते कि नहीं, जो तू है वो। इस सिलसिले में 10th तक में आ गई। 10th में आने के बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं, मैं जो हूँ मुझे एक्सेप्ट करना है। और वो हुआ इस तरह कि मैं मेरा फर्स्ट स्टैंडर्ड टू फोर्थ स्टैंडर्ड का जो एजुकेशन है ये मेरे विलेज में हुआ। देन उसके बाद मैं थोड़ा सा बाहर हो गई, मुझे अभी 5th स्टैंडर्ड में एडमिशन लेना है। तो बहुत बड़ी सिटी में नहीं, लेकिन एक मार्केट वाली जगह पे मेरा एडमिशन हुआ, जहाँ पे हफ्ते में मार्केट लगता है और यहाँ खिचड़ी मांगने आ रहे हैं हर हफ्ते। तो ये लोग कौन हैं, मतलब मुझे खुद को डर लगने लगा कि अरे ये लोग कौन हैं। तो मैं उनसे छुपने की कोशिश करती थी। और ये कोशिश करते करते मुझे रियलाइज हुआ कि मैं किन से छुप रही हूँ, वही जो हमारे लोग हैं उनसे। फिर जब मैंने खुद को एक्सेप्ट कर लिया 5th स्टैंडर्ड में कि ये जो लोग घूम रहे हैं इन्हीं में से मैं हूँ, और मुझे खुद को ऐसे ही एक्सेप्ट करना है, बट मुझे वो नहीं करना है जो ये लोग कर रहे हैं। बाजार मांग रहे, दुकान मांग रहे हैं, कहीं झगड़े हो रहे तो कौन उनको मार रहा है तो किसी को ये लोग मार रहे हैं। तो मैंने वो जब मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इससे अलग बहुत कुछ हो सकता है और उसके लिए एजुकेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। और मैंने मेरे एजुकेशन के ऊपर फोकस किया। 10th हो गया। 10th में मैं एजुकेशन के ऊपर फोकस करने के बावजूद भी फेल हो गई, बिकॉज ऑफ कंफ्यूजन था हु आई एम। और वो हु आई एम का आंसर जो है मुझे 5th स्टैंडर्ड में मिल गया, 10 साल की उम्र में। अब यहाँ से मेरी आगे की असली जर्नी स्टार्ट हो गई। कॉलेज कॉलेज में लोगों का, बच्चों का हरेसमेंट है। इस हरेसमेंट से बाहर निकलते निकलते फिर फैमिली में जो लड़कियां थी उनकी शादियां आने लगी। अब इनकी शादियां मतलब मैं उससे उसमें सबसे बड़ी नौबत कि जो भी लड़के देखने के लिए आएंगे उसकी फैमिली कहेंगे अरे इनके घर में एक लड़का है जो ना छक्का है। तो फिर वो रिजेक्ट हो जाता था। फिर मैंने सोच लिया नहीं, अब मुझे घर छोड़ना जरूरी है। जब मैं घर छोड़ूंगी तो खुद को पहचान लूंगी या खुद को ढूंढ लूंगी, जो अचीव करना है वो कर पाऊंगी। मैंने घर छोड़ लिया 11th 12th स्टैंडर्ड में। और मैं घर से थोड़ा दूर, मिनिमम 40-50 किलोमीटर्स के से मेरी मुंबई स्टार्ट होती, तो मुंबई का फर्स्ट स्टेशन विरार, और मैंने विरार में चली गई। विरार में जाके मैंने ओपन यूनिवर्सिटी से एडमिशन ले लिया और ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ग्रेजुएशन मैंने ओपन यूनिवर्सिटी से कर रही थी, तो मेरे पास टाइम था।
तो कुछ और भी कर सकती थी। मैंने JNM नर्सिंग किया, डायबिटिक असिस्टेंट का कोर्स किया, प्लास्टिक सर्जरी असिस्टेंट का कोर्स किया, और मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। लेकिन यहाँ पे मुझे लोगों ने दिखा दिया कि तुम नॉर्मल नहीं हो, तुम कुछ अलग हो, और तुम्हें आम लोगों के बीच। हेलो, हेलो। Yes, Bhavika, say we can hear you. हाँ, यस। तो यहाँ नॉर्मल लोग, जैसे हम सो कॉल्ड सोसाइटी कहते हैं, नॉर्मल सोसाइटी कहते हैं, तो ये सोसाइटी मुझे कह रही कि तुम्हें हमारे बीच में आके काम करने की जरूरत नहीं, ना ही तुम्हारा वो काम है, तुम वही करो। तुम मांग सकते हो, रास्ते पे मांगो, तुम भीख मांगो, तुम लोगों के घर पे जाके बधाइयाँ मांगो, शादियां हो गई उसकी बधाइयाँ ले लो, या फिर कुछ नहीं तो रेड लाइट एरिया में जाके खड़े रहो। यही लोगों का कहना था, या लोगों के जो नजरिए थे अपने हमारे सामने देखने के, वो इसी तरीके के थे। लेकिन वो जो लोगों की सोच थी उसको बदलना मेरा काम था। मेरे से वो स्टार्ट किया। किसी ने कहा है कि दुनिया बदलनी है तो उसकी शुरुआत खुद से करनी चाहिए, और वो शुरुआत मैंने तभी से की। मैंने हॉस्पिटल में जॉब ज्वाइन कर लिया। 4.5-5 साल तक मैंने वो जॉब किया, और इस जॉब के दौरान कई सारी हैरेसमेंट हो गई। लोगों को हरसमेंट कॉलेज में होती है, या फिर रैगिंग कॉलेज में होता है। मेरे साथ कॉलेज में तो हुआ ही हुआ, मेरे बचपन में तो हुआ ही हुआ, लेकिन जब मैंने इतनी सारी दिक्कतों से, इतने सारी मुश्किलों से निकल के मेरा एजुकेशन कंप्लीट किया, और इतनी मुश्किलों में से मैंने मेरा एक जॉब ढूंढ लिया, और यहाँ पे भी लोगों ने मुझे रैगिंग करना शुरू कर दिया। मैं अगर किसी ऑपरेशन के लिए इंस्ट्रूमेंट्स रेडी कर रही हूँ तो उसमें से इंस्ट्रूमेंट्स छुपाना, मेडिसिन छुपा के रखना। और फिर वो जो स्ट्रगल था वो मेरा नहीं था, वो स्ट्रगल एक्चुअली पेशेंट का था। और तब मुझे ऐसा लगने लगा, एहसास होने लगा कि नहीं, मेरे ऐसे होने की वजह से किसी पेशेंट को स्ट्रगल नहीं होना चाहिए, और अब बस, अब इससे ज्यादा मैं सहन नहीं कर सकती। और मैंने जॉब छोड़ दी, जॉब रिजाइन कर दिया। फिल्म इंडस्ट्री के तरफ मेरा रुख हो गया, क्योंकि मैं स्टेज डांस करती थी, स्टेज परफॉर्मेंस करती थी। तो यहाँ से मुझे एक दो डायरेक्टर ने देखा हुआ था। फिर जो जर्नी मेरी स्टार्ट हो गई है फिल्म इंडस्ट्री से, हो गई सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, आहट, ऐसे सीरियल करते गई। और ये करते करते कहते हैं कि मेहनत का जो फल है वो हमेशा तुम्हें मिलता है, तुम्हारी मेहनत कभी ना कभी रंग लाती है। तो वो मेरे साथ हुआ, और छोटे मोटे शूट करते करते मुझे मिल गया सिक्स पैक बैंड, मतलब यशराज प्रोडक्शन, जहाँ पे आज अच्छे अच्छे जितने भी एक्टर है, एक्ट्रेस हैं, शाहरुख खान से लेके ऐश्वर्या राय तक, जो तरसते थे कि मुझे यशराज प्रोडक्शन कास्ट करे, और फिर लोगों की लाइफ बनी है, शाहरुख खान बना, ऐश्वर्या बनी, सलमान बना। तो सेम थिंग मेरे साथ हुआ। मुझे यशराज प्रोडक्शन ने देखा, यशराज प्रोडक्शन ने मुझे अप्रोच किया कि आप ये एल्बम करो, ये सिंगिंग एल्बम है। तब मैंने कहा कि आई एम नॉट सिंगर, आई एम एक्टर, आई एम डांसर। सो उन्होंने मुझे कहा, एक बहुत खूबसूरत सा एक जवाब दिया कि हमें लता मंगेशकर नहीं चाहिए, लेकिन एक ऐसी ट्रांस चाहिए जो थोड़ी एजुकेटेड हो, जिसको इंडस्ट्री का नॉलेज हो, और आप आइए। मैं गई, 450 लोगों का ऑडिशन हो चुका था, और मेरा नंबर 450, मतलब 450 नंबर मेरा था। मैंने ऑडिशन दे दिया। मुझे लगा शायद से मैं नहीं हो पाऊंगी सिलेक्ट, क्योंकि 450 लोग ऑलरेडी ऑडिशन दे गए थे। अब 7 दिन के बाद मुझे सडनली कॉल आया कि 450 लोगों में सिर्फ आप अकेली सिलेक्ट हो चुकी हूँ, और आपको आना है अब एग्रीमेंट साइन करने के लिए। तो मतलब मैं दीवानी हो गई कि मेरे साथ क्या हो गया, भगवान ने मेरे नसीब खोल दिए। और बहुत खुश होकर मैंने यशराज प्रोडक्शन आई अंधेरी में, मैंने एग्रीमेंट साइन कर लिया, एल्बम स्टार्ट हुआ, और 5 लोग ट्रांसजेंडर्स इसमें सिलेक्ट हुए। और ये एल्बम आज देख ही सकते हो कि इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहा है। कांस ग्लास लायंस मैंने अचीव कर लिया 2017 2018 में। आज तक अपने इंडिया में या फिर एशिया लेवल पे ये एल्बम काम करता है। ये एशिया का सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल अवार्ड है। इंडिया में अभी तक ऐश्वर्या राय बच्चन, दीपिका पादुकोण, सोनम कपूर और प्रियंका चोपड़ा, देन उसके बाद मैं और मेरा बैंड, हमने कांस अचीव कर लिया। कांस अचीव के बाद, कांस ग्लास लायंस होने के बाद, भाविका आप म्यूट हो गए फिर। हाँ जी।
गिनीज बुक हाँ, के बाद मैंने फिल्म इंडस्ट्री के मिनिमम 7 अवार्ड्स अचीव कर लिए। मिर्ची म्यूजिक अवार्ड, बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड। देन फिर एक मैंने ऐड किया अवेयरनेस के लिए, वोटिंग अवेयरनेस के लिए, और ये अवेयरनेस वाला ऐड मेरा काफी पॉपुलर हुआ। कई सारे सेलिब्रिटीज ने ये ऐड शूट किया था, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरा मतलब एक ट्रांसजेंडर का ऐड जो था वो बहुत ज्यादा फेम हो गया, जनहित में जारी किया गया वो। और उसके बाद मुझे मुंबई कमिश्नर अवार्ड मिला। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग कई सारे अवार्ड अचीव कर लेते हैं, पद्मश्री तक पहुंचते हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बैकअप हो सकता है, या कुछ तो भी एक हिस्ट्री हो सकती है उसके पीछे, या कोई एक बैक हैंड हो सकता है। मेरे पीछे कोई ऐसा बैक हैंड नहीं था, और मैं यहाँ तक पहुंची, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ी। और ये श्रेय सारा मेरी मम्मी को भी जाता है, मेरी ट्रांस कम्युनिटी को जाता है। अगर मेरी माँ ने मुझे सपोर्ट नहीं किया होता तो शायद से मैं ये अवार्ड तक मैं नहीं पहुंच पाती, ना ही मैं जिंदा रह पाती। अगर मेरी माँ मुझे सपोर्ट नहीं करती तो शायद से मेरे साथ कुछ बुरी घटनाएं घट सकती थी, या मेरी कम्युनिटी कि कुछ हद तक मेरे साथ नहीं रहती, तो शायद से मैं आज जो भाविका हूँ वो भाविका नहीं होती। भाविका बहुत ही इंस्पायरिंग थी। बहुत लोग नहीं बोलते ये चीज कि हाँ मैं पढ़ाई में एकदम फोकस कर ली पर क्लास 10 में फेल हो गई। मतलब सक्सेस के बारे में तो सभी लोग बात करते हैं, फेलियर के बारे में बहुत एग्जैक्टली। तो आपने बड़े मतलब बिना हिचकिचाहट के आप ये बोल दिए कि बराबर जी का। मैं। अभी मीटिंग है। हाँ बोलिए, तो सॉरी। आपका मैसेज क्या है जो लोग छेड़ते हैं, जो रैगिंग करते हैं, बुली करते हैं, चाहे हम स्कूल में हो या कॉलेजेस में हो या रास्ते में सड़क में चलते हैं, फिर लोग देखते हैं अरे ये तो ऐसी है, बहुत सारे नाम देते हैं, कभी कोई किन्नर यस बोलते हैं, यस कभी यस। सिर बोलते हैं, हाफ स्लीव। मैं हमेशा मेरे मोटिवेशनल स्पीच में बोलती रहती हूँ, या जहाँ जहाँ मेरे इंटरव्यूज होते हैं, मैं एक ही बात कहती हूँ कि समाज को सुधारने की कोशिश करने से अच्छा। आप म्यूट हो गए फिर से। हर एक वो फैमिली को, हर एक वो माँ बाप को, तुम्हारे बच्चों के लिए, जैसे हम हमारे बच्चों को संस्कार करते हैं कि ये दादी है, दादी का रिस्पेक्ट करना चाहिए, ये मैं हमारे पापा होते हैं इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, नाना जी है, दादाजी है, इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये हम संस्कार हमारे बच्चों के ऊपर करते हैं। तो सेम लाइक दैट एक संस्कार आप हमारे लिए कर सकते हो कि ट्रांसजेंडर होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, ये सारी चीजें कहने की जरूरत ही नहीं। बस ये ट्रांसजेंडर होते हैं, ये भी इंसान है और ये हमारे जैसे हैं, और इन्हें भी हक है हमारे समाज में जीने का, हर वो एक चीज अचीव करने का जो नॉर्मल समाज हमेशा अचीव करने की अपेक्षा रखता है। अगर ये संस्कार हम हमारे बच्चों में डालते हैं तो आगे के 10 साल के बाद या 5 साल के बाद जो नई पीढ़ी आएगी, ये नई पीढ़ी अपने आप ही हमारा रिस्पेक्ट करने की कोशिश करेगी, या रिस्पेक्ट करना सीख जाएगी। तो और अलग से कुछ सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही कुछ और अलग से अवेयरनेस करने की जरूरत पड़ेगी। रही बात समाज की, तो मैं इस समाज को वही कहना चाहती हूँ कि समाज ने तो हमेशा अच्छी चीजों का तिरस्कार किया है, या आगे बढ़ते हुए इंसान को हमेशा तिरस्कार किया है, लेकिन हम ट्रांसजेंडर है, हम हमारी कोशिश कभी नहीं छोड़ेंगे। हम तो ऐसे ही है भाई, और ऐसे ही चलते रहेंगे। आपको देखना है देखो, नहीं देखना है नहीं देखो। आपके देखने से कोई चीज या ना देखने से कोई चीज रुकती नहीं है। समाज तो हमेशा चलता रहता है, और दुनिया हमेशा चलती रहती है, वो चलती रहेगी, वैसे हम भी चलते रहेंगे। थैंक यू भाविका। हमारी स्ट्रगल जो है ना 50% वैसे ही कम हो जाते हैं जो पेरेंट्स। यस यस एग्जैक्टली। आपके मामले में क्रिस्टीना, हेलो। हाँ जी। हाँ, सो अभी मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊंगी बिकॉज ऑफ मैं स्टेशन पे हूँ, लेकिन अगर मैं घर पहुँचते पहुँचते या ट्रेन में कहीं से भी मुझे अगर ऐसा लगता है कि मैं मीटिंग ज्वाइन कर सकती हूँ तो मैं जरूर बीच में ज्वाइन कर लूंगी। ठीक है कोई बात नहीं। थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच। मच, एंड सॉरी वंस अगेन बिकॉज ऑफ मुझे बहुत कुछ चीजें बोलनी थी जो मैं नहीं बोल पाऊंगी बिकॉज सिचुएशन ऐसी है। ओके बाय। आपने समय दिया उसके लिए बाय। धन्यवाद। तो दैट वाज भाविका, जो मतलब खुद ने इतनी
इंस्पायर करते हैं लोगों को, और जब फैमिली सपोर्ट करते हैं तो 50% हमारे वैसे ही घट जाती है, वैसे ही कम हो जाती है. I'm sure Sam will also agree with that. So Bhavika has been through a lot, and if you don't want another Bhavika in this society, in this world, you know, who will go through so much of suffering, who will be mocked or teased, but फिर भी हार नहीं मानी. इतने तकलीफ झेलने के बाद भी भाविका ने हार नहीं माने. उन्होंने ना नहीं कहा कि ठीक है मैं ये नहीं कर सकती. गिरे लेकिन फिर से उठे और अपने आप को संभाले और फिर से दुनिया के सामने बनाया. Actually, she is a well-known personality. So my only request to the society would be, please respect in order to get respect. So our next celebrity guest, I'm so thrilled because I've known Sam like. Thank you very much. But yeah, I always wanted to get in touch with Sam, but I always thought यार ये कैसी होगी. है तो मतलब हम दोनों एक ही हैं, बट फिर कैसी होगी. मुझे बहुत लगता था इसके अंदर बहुत एटीट्यूड होगी, ये बात नहीं करेगी. बट इट वाज सो हम्बलिंग. जब मैं पहली बार मैसेज की फट से रिप्लाई कर दी, बात की, मैंने कहा यार ये तो बहुत मतलब कूल बंदी है, ये तो इतनी भाव नहीं खाती है, सेलिब्रिटी है फिर भी. So Sam is actually a well-known, acclaimed, and India's first iconic leading celebrity transgender fashion choreographer, dancer, fashion stylist. She is an entrepreneur, she's an influencer, she's a pastry personality, a motivational speaker, she's into public relations, and she's also into celebrity management. Now, if I speak about Sam, I'll just go on talking about Sam and her achievements and everything. But I would want Sam to talk about her own achievements, her struggle, her failures, her downfalls, what inspired her, what made her to never give up in life, and who she is today. Who would she like to give the credit to? वो किसकी आभारी होना चाहती है, किसने उसका मदद किया, कौन कौन उसके साथ थे, कितना फेलियर वो देखी है इस मुकाम से पहले, जहाँ पे भी वो पहुंची है अभी, यहाँ पहुंचने से पहले कितना स्ट्रगल, कितना मुसीबत झेली है. सो हम सुनेंगे सैम की ही ज़बानी. सैम, वेलकम टू माय शो. Hi, how are you? You can hear me? I am good. Okay, hi, and hi to everyone over there, Tanveer and Miraj and Bhavika and Candy. Hi to all of y'all, and it was lovely seeing each and every one of you. I'm so happy that I could not meet with you guys, but at least through this Zoom, I can see y'all, and it looks very fresh, you know, and you all are looking very beautiful. And Christina, thank you so much for giving me this mileage, for coming over here online and speaking with all of y'all. और मैं थोड़ा हिंदी बोलूंगी और mostly I'll speak in English because मेरा हिंदी थोड़ा सा गड़बड़, you know. Yeah, so that's there. And Christina, as you know me, and I think Candy also knows me very well. You also know me very well, and y'all have seen me from my past till my present. All right, but then since it's been very long, I have left Calcutta. Almost say 20 years is going to be now. I think 18 years. And I have left Calcutta, so I'm not there, but still, you guys know me very well. How was my past? Whatsoever, you all know that, all right? But then those people who does not know me, I will tell them. Since Christina has said few things about me, about my resignation, where I belongs to. So yes, I am into fashion industry, and it's been almost 25 years I have given to this industry as a fashion choreographer and a stylist and a dancer and an actor. Well, but then I will just break into it how it came. In 1997, I was a dancer, and then
I started doing dance shows, and that's how I became dance choreographer in 1999. In 2000, I was a dance choreographer, and then in 2002, I then stepped into, since I was into dance, and dancing means I was doing stage shows with models. So that's how I got the knowledge of fashion, where fashion is related. And then I became a models coordinator, and then I became a fashion choreographer in 2004. And from that time, my journey went on. And plus I used to do my studies. My studies were also on. But then in 2004, I finished my studies. And the day I finished my studies, that very first day was my train to go to Bangalore. And as you all know, study is very, very important in life. But money is also important. And when you get the way of earning, तो फिर लोग वो पढ़ाई को जो आगे कंटिन्यू करना होता है उसको लोग कहीं ना कहीं भूल जाते हैं. And obviously, and parents, family background को देखने के हिसाब से वो पढ़ाई को छोड़ देता है. And she goes on a journey for earning money. So that's what happened with me. Since I was into this field from my study time, तो उस वक्त से ही मैंने पढ़ाई को आधे रास्ते पे मैंने छोड़ दिया और फिर मैं बैंगलोर चल गया. And then I worked in movies over there. As you can, I have worked with 6 movies I have done, South Indian movies. और उनमें से सबसे बड़ा एक मूवी जो ऑस्कर मूवी था, शिवाजी द बॉस. I have played a role in that. With Rajnikant, I have worked, and I have worked with Deepika Padukone. I have worked with Kamal Hassan. I have worked with many other South Indian actors, and that's what my journey into acting film. It was in Bangalore. But then in 2007 एक accident हो गया था मेरे shooting के वक्त में. फिर मेरे हाथ fractured हो गए, and I could not take care of myself over there, so I had to come back to Calcutta. And that was a period, in 1.5 period time, that 2007 से 8 तक, वो 1.5 साल का जो मेरे 1 साल का जो difference जो था, period जो था, that time only I had joined a company called BNKE, and over there only I met with Christina. I met with Candy, and then you guys have seen me how I worked over there, and जैसे भी करके मैंने 1.5 साल काटा वहाँ पे. And then after that, and then as you know Christina very well, कि अभी ये जो transgender जो word है, it was not acceptable at that time. And though there were many transgenders, there are many kind of personalities into the company, but then that company was somewhere down the line, आप ऐसा नहीं पहन सकते कपड़ा, आपको वैसा पहनेगा, वैसा नहीं कर सकते तो वैसा करेगा. तो ये आइडियोलॉजी मुझे समझ में नहीं आया, because कंपनी में हम लोग जब जाते हैं तो वहां पे काम किया जाता है, तो कंपनी को हमारा काम देखना था कि हम क्या काम करते हैं, कैसा परफॉर्म करते हैं और कैसा नहीं करते हैं. तो अगर परफॉर्मेंस में अगर कोई गलती हो तो आप बोलो तो मैं मान लो, लेकिन कपड़े पहनने में तो वो थोड़ी सी आइडियोलॉजी मुझे समझ में नहीं आया, बोल के ही मैंने वो कंपनी को छोड़ने का प्लान किया. बट देन बिफोर आई कुड लीव, मैंने उस कंपनी का एनुअल इवेंट कराया, दैट वाज अ बिग हिट एंड पीपल लव्ड इट, माय वर्क. एंड देन बट देन आई वाज लाइक कि मेरे से और ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे मैं इस कंपनी पे, और प्लस मेरे हाथ उस वक्त आस्ते आस्ते ठीक हो रही थी. देन आई थॉट कि नो, इट्स बेटर टू गो बैक टू माय ओन बैकग्राउंड वेयर आई वाज. एंड देन आई मूव्ड ऑन टू दिल्ली. नाउ I have a habit of experimenting situations, experimenting languages, experimenting, people over there. So I used to go to all the cities. I have been to all the metropolitan cities in India, and I have stayed there, and I have, worked and understand what the marketing value is all about.
So that's what I have done. I did. I went to Mumbai, I went to Bangalore, I went to Hyderabad, I went to Chennai, I went to Mysore, and there were many other small states, cities, or you can say I have been to all those places. And at the last, I was like, यार दिल्ली कभी नहीं किया, दिल्ली जाना चाहिए मुझे. तो and that's how एक दिन क्या होता है कि and as I said, transgender kind of that word category, transgender word, it was not accepted at that point. So one day I just had a big blast and big fight, or you can say a big fight it was, with my father and with my brother, with my mother, and they all started telling me, how she is or he is, and how she dress up and this and that, and many kind of stories came up to over there. And then I just went out from my house, and I just had a wallet in my hand, and I went to the I went to the railway station, and unfortunately I met with another person over there. And that's how crying I was crying, and we sat on the train, and we never knew that the train is moving, and the next day we saw that we landed up in Delhi. So I was like, oh my god, मैं दिल्ली के बारे ही सोच रही थी और मैं दिल्ली में ही आ गई, और वो भी अचानक से, कोई कपड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं, बस मेरे वॉलेट मेरे हाथ में और मेरे फोन, और कुछ भी नहीं. And that's the journey I started in Delhi. And since I landed up, so I had the wallet and I had some amount in my account, and then I booked a hotel. I swear, and I'm in Delhi. So this was my short story about my ups and downs. Now from there the journey starts. Now I was a fashion choreographer from 2004, as I said, but then when I came in Delhi, it was just by, what will I use the word? Just by, maybe I can say center. It was a hoof. Just suddenly I landed up. There was nothing like which I planned or something or the other, but then I was thinking, अब तो मैं आ तो गया दिल्ली पे, अब मैं करूँगी क्या यहाँ पे? So that was a big question for me in my mind, and there was another friend of mine along with me. She was with me. So first day कैसा भी करके हमने दिन काटा, and फिर हमने होटल भी लिया, and I took a hotel, and I was just sitting over there and I was thinking, like, what will I do? What will be my next step? And then in the evening I thought, okay, chalo, let's go out. So when I came out, there was an auto guy, and I will never forget him, because I still remember him a lot, because he was like, in Delhi it's like, I hope you can hear me, Christina. Okay. Yes, I can. So in Delhi it is like, auto guys somewhat, they come to know what type of people we are, and they catches us, and it's very easy to go in auto at night time, rounding and all that. So I hope you can understand. So that's how this auto guy met with me, and then I told him, let's go, take us to the eating place. He took us over there, and we had dinner. And coming back time, he was like, he was telling us, ma'am, ek baat bolu main aapko. So I was like, yeah, tell me. So he was like कि आप लोग का एक पार्टी होता है. So I was like, what do you mean by that? He's saying कि नहीं, एक जगह है जहाँ पे आप लोग, आपका कैटेगरी के लोग वहाँ जाते हैं. तो मुझे समझ में आ गया कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा था. तो I was like, हाँ, तो he was like कि क्यों नहीं आप वहाँ जाते हो, तो आपको वहाँ पे पैसा भी मिलेगा, आप वहाँ कमाओगे भी. So I was like, आइडिया तो सही है, बट ऐसा क्या है कि मतलब ऐसे क्यों लोग हमें देखते पैसा दे देगा.
तो he was like कि नहीं, वो एक क्लब है, वहां पे डांस करना है और डांस करते ही लोग कमाते हैं वहां पे, तो अगर आपको नाचना आता हो तो आप वहां पे जाओ। तो आई वॉज लाइक कि यस आई एम अ डांसर एंड ठीक है ले चलो वहां पे। एंड देन ही टेक्स अस टू द क्लब, to that particular place, and I will not take the name of the club, okay, but he takes us over there, and that's how I thought, why not, like, dance and earn money till I don't get something. And then I started dancing, and people started giving me money, and I was like, oh wow, it's very nice, it's good to, it's very easy way of getting money. And that's how people, they started liking me and my dance, and they started giving me money. But एक्चुअल सैम विलियम जो है ना, वो किसी को नहीं पता था उस टाइम पे। बस उनको इतना पता है कि मैं एक इंसान हूं और मैं डांस कर रहा हूं, मैं पैसे कमा रहा हूं, और वैसे ही मुझे लोग मिलते गए, इन माय जर्नी। एंड देखते देखते मैं 1.5 साल, 1.5 year from that day, the day when I landed up in Delhi, from that time till 1.5 year I was staying in a hotel, paying the rents, and that's how my journey went on for 1.5 year. And after 1.5 year, then I get the first break of my real personality, my real work, what I do, which is a fashion choreography. Then I got the work, because in the past 1.5 years journey, I was only struggling to look for the right place, and to go to the right place or to get the right platform is the only place which I had was to party at night, dance, and that's how I was making my contacts over here. That's how I get to meet with people. So it can be, it was dancing, it was more other kind of work also which I used to do, and I will not name it, but I used to do. And then I used to get money. That's how, because obviously for living you have to get something or the other, some money or the other, because it's very hard for us to survive. And since it was, and it's like, I was not even like what I am right now. I was just like a boy that time, you can understand, and it's like I cannot explain, right? I cannot express that feeling, which I used to have, which I used to feel at that moment. But then that was my life and it was my journey. So that's how I maintain. And then after 1.5 years, I got the show and I hit on the floor, and it went on and on and on, and many awards and many kind of things happened, and I got it. And then in the year 2018, there was, now again, just to stop in 18, okay, again it's like now transgender was not accepted and it was not legalized till that moment, which you have to keep in mind. So in 2018, I was coming out from a party and from an event, and then since you stand on the road, because I was standing because it was on the main road the hotel was, and I was standing over there for my taxi to come, but the driver was taking a lot of time because he was not able to locate my location. So there was an auto guy, I told him to come, and then there was a quarrel between me and the auto guy, and by mistake my hand hit the auto and the glass broke, and that's how, just a twist came in my life, and I was into police station, and police people, they all harassed me a lot. And the next day I gave a bang and I fought, and I went to everywhere where I could go to get my justice. And in 1 week time I got justice from the Delhi police, and the justice which I got, and the police, those who have done harassment to me, and that auto wala, they all got, their punishment in their own place. And then these media people, they started, since I was into media field,
So they wanted me to, they wanted me to come on the channel and talk about my problems and tell the people what it was. So that time it only transgender got legalized. And since transgender got legalized, I thought, Sam, this is the time for you to buck up and give a bang and come to the right place where I belong to. Because since I have come from a very, very, very strict background and from an educational background where my brothers and my cousin sisters, so I have to see many kind of things, what they will think and what they will say. That's the reason I was never so open about myself. But then, since I was into acting and fashion industry, since both in film industry and acting industry. So an artist is like, jaisa des vaisa bhes. So I used to go and dress up and I used to be in that form, So it's like an artist always follows the way it's been conducted. So I used to always follow myself in that way, because when I used to go to the Hijras community, I used to become like one of them. But when I used to do my fashion kind of work, so community, then I used to become like one of them. When I'm at home, I am different. When I'm out on the road, I am different. So I used to carry 4-5 characters, It can be, and you can say a character, I used to be in 4-5 character into 4-5 looks and into 4-5 kind of different kind of looks and into different kind of get-ups. I used to carry myself so that every citizen and every kind of authorities, whosoever in their own places in these characters they are, that they will feel comfortable. And because, as you can understand, like people, when they see transgender coming and they're like, oh my God, I'm not into this, and who is she, why is she here, and how they behave. So that's how I used to always be in the character. But then, since this incident happened with me in 2018, I was like, Sam, I think it's time to give a bang and I need to come back on my own character, because I need to accept myself. Now, the accept word, people says, until unless you don't accept yourself, nobody will accept you. But then in my way, my point of view, it was like, okay, I do agree to that kind of terms and to that wording. But then I have accepted myself when I was 4-5 years old. I know what I was from inside. But people were not accepting us, and especially the workplace, And I have done so many kind of work in my life. I have been to many kind of platforms I have done jobs with, but then there was no acceptance. So what should I say? Should I talk about ourselves, myself, that we did not accept ourselves, or the people who were there, they were not accepting us, So I was like कि accept तो मैंने बहुत साल पहले ही कर लिया था, लेकिन समय लग रहा था कि कब एक तरीका हो कि जहां पे हम उभर के निकले और हम सब सामने आए, तो वो चीज नहीं मिल रहा था हम लोगों को. And that's how in 2018 जब ये transgender, because it's not only me a transgender or you, there are several, there are so many transgenders, but they were not getting the acceptance, and that's how it was a bang and it became legalized and we came into the platform. So I was like, why should I move back? So when I came on the news channel, I came in totally in my own form and my family, and I knew that this news is going to be watched by everyone in the country, and especially my family members, my sisters, my brothers, they all are going to see this news. So I came in that form in the news channel. It was international, and that's how it started my journey as a transgender from there. Thank you, Sam. I mean, your story is really inspiring. And then it went on and on in so many other news channels. It went on, and that's how I became transgender. But then, yes, one thing I must say, whether it's Hijra community
whether it's transgender community or whether it's non-community, wherever I have been, but I got a lot of respect. I got a lot of love. There are very, very few places, I will say, especially like, this hatred, which I will talk about. The hatred, I can say, or maybe the non-acceptance. It's somewhat because the city from where I belong to, you also know Christina very well. We are from Calcutta, and Calcutta is Calcutta was a metropolitan city. It was the capital of India once upon a time, but now it's not. And I'm very sorry to say that I belong from Calcutta and I do respect each and everyone over there. But then the hatred and the non-acceptance was in Calcutta only, which I have faced. And that's how I came in Delhi. But when I landed up in Delhi, trust me, everything is so smooth, so cool, and there are acceptance each and everyone in Delhi. Yes, there might be some who must have faced the consequence, and there must be some who must have faced the problems. But where I am concerned, I did not face any kind of things like that, and my journey was very nice. And by God's grace, somewhere it's there. That's what I wanted to talk about. Thank you so much, Sam. Your message is very strong to the nation. Your message is very strong to the world that yes, let's not spread hatred any longer, anymore. Because if you only go ahead and show it on social media that I accept the LGBTQI plus community, or I am in support of gender equality at workplace, that is not going to help till the time you do not bring that change in yourself. जब तक आप अपने बदलाव नहीं लाते हैं, लोगों को आप बदल नहीं सकते हो, तो आप पहले अपने अंदर वो बदलाव लाओ, आप पहले खुद एक्सेप्ट करो, उस चीज को स्वीकारो, और तभी हम समाज में भी ये बोल सकते हैं. तो ये थी सैम, आइकॉनिक लीडिंग फैशन कोरियोग्राफर. मूवी इंडस्ट्री में काफी सारे नाम है इनके, आए दिन न्यूज़पेपर में भी आर्टिकल्स आते रहते हैं, मैं देखती हूँ, मैं खुद फॉलो भी करती हूँ इनको, और मेरी बहुत अच्छी दोस्त. तो सैम की स्टोरी सुन के आई एम श्योर बहुत लोग इंस्पायर होंगे. अगर आप लोगों को कोई भी सवाल करनी हो या कुछ भी पूछना हो, सैम फेसबुक में है, आप मैसेज भेज सकती हो. ऐसे नहीं कि वो रिप्लाई नहीं करेगी, जब भी उनके पास समय होंगे वो रिप्लाई करेगी. मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मैं भी फेसबुक में, आप रिप्लाई कर सकते हो. सो सैम की स्टोरी अगर आपको अच्छे लगे, आप हमें लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए ये वीडियो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके और हम लोग और भी लोगों को इंस्पायर कर सके अपने अपने स्टोरी से. अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं मेरे बहुत. And yes, one more thing I want to say, Christina, little bit. Happy Mother's Day to each and every one of you. Yes, happy God Mother's bless Day. you all. Thank you so much, Sam. Thanks for that wish, lovely wish. So now we have Tanveer. Now about Tanveer Khan, I've not prepared anything to talk about him because he is one person who supported me a lot as an individual. जब भी अरे नहीं तुम ऐसे ही तुम कर सकती हो, ये आओ ना यहाँ पे चलते हैं, चलो ना वहाँ पे चलते हैं, तुम्हें मिलने चाहिए और भी लोगों से. और मुझे विमेन अचीवर्स अवार्ड भी इन्हीं के फाउंडेशन के तरफ से, क्वींस एंटरटेनमेंट अंडर कोलकाता हीरोज, उनकी तरफ से इन्होंने फेलिसिटेट किया था वुमेन अचीवर्स अवार्ड से. और उस दिन से देयर इज नो टर्निंग बैक फॉर मी. मैं आई थी और तनवीर यही है. आज औरतों के बीच में तनवीर को मेघराज जी को बुलाई, खास करके दिखाना है मुझे, कुछ लोगों को दिखाना है सोसाइटी को कि है आज भी मर्द लोग हैं जो सपोर्ट करते औरतों को, जो कहते सिर्फ नहीं है कंधे से कंधे मिला के चलिए, पर उनके साथ कदम से कदम मिला के चलते हैं, हर मोड़ पे उनका सहयोग देते हैं, उनका हेल्प करते, मदद करते हैं और उन्हें और भी इंस्पायर करते हैं. So one such inspiration is with us, and that's none other than Tanveer Khan, who is here, and I'm sure people who are watching, they will agree with whatever I speak about Tanveer. Hi Tanveer, welcome.
to this Voice of Manavta channel. Welcome to my show. We can't hear you, Tanveer. Can't hear you. So I'll Nahi go sun without pa- headphone. I think this is audible. Yes, yes, very good. This is audible. Okay, so I'll go without the headphone today because I'm still on road. I came from an activity, so take my apology for being late. Thank you, Voice of Manavta, and especially to Christina for such a curating this lovely platform to bring such like-minded people. I would say I won't discriminate in terms of community to a community, but we all are human beings. So, and a round of applause to Christina and the entire team of Voice of Manavta for creating this platform, because we need to aware lot people on such an issue where people hardly talk. So we all talk on the kind of the good being, well-being, good wishes and everything. But when it comes to talk about the local stereotype and talking what need to be taken care or solved, we need to really highlight. So I'm honored and happy to be here. So over to you, Christina. So, Tanveer, tell us about your journey, okay? I'm sure today you are a name in the industry, be it fashion or be it public relation, or you've helped so many people in public relation. You've helped so many organizations. You have helped so many individuals when it comes to their work and all. So what inspires you to do, even though at times you don't get paid for all these work, but still you go out of your way to help people? And I have seen that. What inspires you to give Women Achievers Award? What inspires you to tell the females that you should do your branding, you should be more, you should come out in the world and speak about yourself? So why do you do so much for people, who are close to you? Even if they are not close to you, still help them. So what motivates you or inspires you to do these things? See, Christina, I believe in one statement which talks about every day there is another chance to bring smiles and do some potential good work. I believe we all are human beings, and why on earth we are together? Because just to support and encourage each other. This is the last and the least thing that we can do for each other, be to anyone, women or the men. Why especially me be seen with the men's and men and then women and a woman? Because I take up an agenda in 2020 that for me, Women's Day is just not for a one day kind of a gathering. I believe that every day there has to be something, a way to celebrate the womanhood, a way to encourage and empower them. So my feel is we just have to take that one step ahead and do something great for the community, and it just start from you and then to the next person you're supporting. I think the moment you support others, you automatically get the same support to yourself. So the more you network, the more you connect, the more you connect, the more outcome you get. The more outcome you get, the more changes you see in the community. So I feel that as me as a volunteer to this nation or the country, where my first duty would be to support myself and the support whoever's standing next to me. That's really lovely. Now tell me something, or rather tell our viewers, tell the people something. You are supporting a lot of people. You have become an inspiration, but it was a long journey, I'm sure. So what were the hurdles that you have faced? Did you get the same support that you give to the nation today? Usually, I would say it's just like a kind of a 50-50, crack and jack kind of a thing. I don't expect the same support from the people because, I go without expectations. For me, doing something really matters instead of expecting the same pan or the same lay from the other person. Yes, there was a lot of hurdles. There was a lot of, the edge where when I started, doing like a networking for the women's, or especially working for the, the transgender brother and sister. So there was a lot of stigma. Acha, have you joined this community, or you belong to the same, the race and everything? I said, why we target or why we specific this community? I think I see them as a brother. I see them as a sister. I see them as a friend. For me, there is no such community. We all are equal, and I don't discriminate them. So initially, a lot of people, they कुछ लोगों का काम है कहना, वो कहावत आपने सुना ही होगा, तो वो कहते ही हैं. So my simple point is कि I believe in myself and I believe what I do. And in the recent days also, there are a lot of men who says
आप हमारे लिए कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं? व्हाई ओनली फॉर द विमेंस एंड स्टिल यू आर सेफ? सी मैं यही बोलना चाहूंगा जस्ट टू एनकरेज अदर्स, सी हर्डल्स तो रोज आते हैं, डिफरेंसेस तो रोज आते हैं, और ये एक चैलेंज होता है हमें रोज जीने के लिए। तो वो चैलेंजेस के साथ अगर आप नहीं जी रहे हैं तो आप सक्सेस भी नहीं देख पाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं और इसका इम्पैक्ट क्या है। इफ यू अंडरस्टैंड दिस होल लेयर ऑफ वर्क, यू आर शॉर्टेड इन योर वे। ग्रेट। सो आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग जो आपको इंस्पायर करते हैं, उनके बारे में कुछ बताइए। मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिनसे भी मिलता हूँ कहीं ना कहीं मैं सबको इंस्पायर करता हूँ, वो मेरे से इंस्पायर होते हैं, बिकॉज हम सबसे कुछ ना कुछ सीखते हैं। एज आई सेड, वी आर ह्यूमन बीइंग, तो कहीं ना कहीं अच्छी चीजें, बुरी चीजें हम एक्सपीरियंस करते हैं और हम कुछ ना कुछ एज अ लर्निंग एवरी डे, एज आई सेड इन द स्टेटमेंट दैट आई लर्न ईच डे। So I tend to receive some good. अभी हमारे पास दो रास्ते होते हैं, whether to go with the positive or the negative. I always feel that when you're positive with your mind and when you tend to or lend a support from the people, तो आपके पास दो choices होते हैं, whether to take that positive or whether to take that negative. So I always chose that the positive from the people, and this is how I believe in doing. तो कुछ लोग आते हैं, we must have seen कि लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है, when you meet someone you get very exhausted. So you tend to take that negativity from that person. तो अगर ऐसा लगता है, just cut the dot and walk away from that place. Instead, give them some good theme warm. हम advice देने में बहुत ज्यादा believe करते हैं instead of action. So my saying would be कि आप advice जरूर दे, but advice के साथ साथ उसको execute करें। यहाँ पे लोग बोलते बहुत कुछ है, but when it comes to the working actually in the ground, they are nowhere. They just seen in the social media good photographs and talking high about the community. And एक और चीज भी मैंने देखा है, like recently I spoke about there are lot of NGOs, lot of community specific the activists, they're saying that I'm doing great for the community. I'm sure they're doing great, but कहीं ना कहीं हमारे बीच में एक synchronization जो होना चाहिए ना लोगों में, वो missing है. When we say we are working for a cause, let's come together and work for a cause. यहाँ पे कहीं ना कहीं अभी भी वो fame related issues है, अच्छा वो आगे बढ़ जाएगा, मैं पीछे, वो पीछे तो मैं आगे, ये चीज को खत्म करें। मतलब कहीं ना कहीं आपको ये सेल्फ एप्रिसिएशन में बिलीव करना पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ looking at who is appreciating you. The moment we stop that who is appreciating who, you appreciate yourself and keep walking, because this is like a long race and a long road. You have to keep walking. मैं पर्सनली ये भी देखी हूँ, आपसे जब भी मैं खास करके पर्सनली कोई भी हेल्प मांगी हो, कभी ना नहीं बोले हो, चाहे वो मतलब गिफ्ट हैम्पर्स देने हो बच्चों के लिए जो सड़क पे है, जो होमलेस बेघर बच्चे हैं, या खुद के समय देने हो, आप हमेशा आप प्रेजेंट रहे हो वहां पे। तो ऐसा जब वक्त आते हैं, जब आप लो फील करते हो, तो आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करते हो, कैसे इंस्पायर करते हो, क्या सोचते हो उस वक्त? जब मैं लो फील करता हूँ, आई थिंक कहीं ना कहीं ये हमने नाउन पे नाउन पढ़ा होगा, तो हमारे अंदर कुछ कुछ क्वालिटीज है एंड कुछ कुछ पैशंस हम रखते हैं अपने लाइफ में, कुछ कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में मैं बिलीव करता हूँ। तो जब मैं लो फील करता हूँ ना, तो मैं उन लोगों के साथ बैठता हूँ जिनको ये हाई लो से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऑटोमेटिक क्या होता है, उनकी जो एनर्जी है वो आपके ऊपर में आ जाती है। सपोज अगर आप कहीं पे फील कर रहे हो, देयर इज नो वन टू सपोर्ट यू, गो एंड सिट विद दैट 3 चिल्ड्रन, ट्रस्ट मी, दे आर सो जेन्युइन, दे आर सो जेंटल। वो उनको पता ही नहीं होता ये हाई लो क्या होता है। उनके साथ जब बैठोगे ना, ऑटोमेटिक दे आर देयर ओन जोन एंड दे गिव यू दैट पावर ऑफ एनर्जी। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आई डू स्पेंड क्वालिटी टाइम with all the people, and मेरे बुक में अंडर प्रिविलेज बोलकर कोई नहीं होता। मैं कहीं ना कहीं we are also not privileged at everything, so I also count myself कि I'm not that privileged, but yeah, list what we can do, whatever we have, whatever we can do, we should do it instead of talking. तो मैं म्यूजिक सुनता हूँ, मैं लोगों से मिलता हूँ, बात करता हूँ, अच्छी बात करता हूँ। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है when you are connected with so many networks, how to avoid that conversation if you're getting the negative. Just simply अगर आपको लग रहा है कि someone is bitching about someone and you can't take that negative, just say, hey, I'm busy with something, can I call you in some time? वहीं पे आप connect dot को अपना काट देते हो। So the moment you cut that dot, you're happy. So and कोई आपको खुश नहीं कर सकता until you really want to make yourself happy. तो आप दूसरों में बिलीव ना करें, मतलब खुद को खुश नहीं रखने के लिए खुद खुश रहें। आपका एक मैसेज, हम ऑलमोस्ट मतलब कॉल के एंड तक आ रहे, तो आप
अगर दुनिया को मैसेज देना चाहते हैं तो क्या मैसेज होगा पॉजिटिव रहने के लिए या फिर खुश रहने के लिए? बिकॉज आजकल लोग क्या सोचते हैं ना, अरे मैं ये जूता ले लूं तो मुझे खुशी मिलेंगे, अरे मैं ये नया फोन ले लूं तो मुझे उनसे खुशी मिलेंगे। तो इन सब चीजों में लोग खुश होते हैं। जबकि अभी हमने रिसेंट एक एक्टिविटी किए थे, बच्चे लोग को ले जाके जो पार्क स्ट्रीट के फ्लाईओवर के नीचे रहते हैं उन लोगों को पिज्जा खिलाए थे। तो चीजों में हम देखे वो बच्चे लोग कैसे खुश रहते हैं, वो आपस में कैसे मिलजुल के गाना गा रहे थे, कैसे एंजॉय कर रहे थे, और आप लोगों के आने के बाद और कितना। ऐसे ही अगर आपको एक मैसेज देना है दुनिया के लोगों के लिए, तो आप क्या मैसेज दोगे कि डिस्क्रिमिनेट ना करो, जज ना करो, और एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज दुनिया के लिए? आई थिंक कहीं ना कहीं मैंने अभी कुछ दिन पहले ही भी बोला, गो विदाउट एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, आप जब एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते हैं ना तो ऑटोमेटिक आप पॉजिटिव होते हो, खुश होते हो। एंड कभी कभी दो किस्म के लोग होते हैं, एक वो लोग होते हैं जिनकी खुद की खुशी में खुशी होती है, और एक वो लोग होते हैं जो दूसरों की खुशी में खुश होते हैं। तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं। उसके बाद अगर आपको लगता है कि खुद की खुशी में खुश होते हो तो आप वही करें जो चीज आपको खुश करता है। एंड अगर आप दूसरों की खुशी में बिलीव करते हो देन डेफिनेटली आप दूसरे को खुश करते हुए अपने आप को खुश करते हो। तो कहीं ना कहीं अल्टीमेट मोटिव यही है कि आपको सिर्फ बोलना ही नहीं है, यू हैव टू डू सम एक्शन। एंड ट्रस्ट मी, इफ यू रियली फील दैट यू नो आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट भी अच्छा ही आता है। So my message to the society is कि to make others good, make sure you are good. To make other happy, make sure you are happy. You know, कहीं ना कहीं ये सिंपल मैसेज है। ये मतलब है ना, हम हमेशा हमने देखा कि सोशल वर्क करने के लिए हमें एंजॉय चाहिए होता है, सोशल वर्क करने के लिए हमें एक दूसरे से जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। आई थिंक कहीं ना कहीं ये सोशल वर्क जो है ना खुद की फैमिली से स्टार्ट होती है, खुद के कनेक्ट जो आपके है, मतलब आपके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज है, रिलेटिव्स, उसके स्टार्ट होते हैं, आपके नेबर से स्टार्ट होता है। यू डोंट हैव टू गो आउट ऑफ द बॉक्स टू एनी अदर कम्युनिटी टू सपोर्ट पीपल, जस्ट स्टार्ट फ्रॉम योर ओन फैमिली। बहुत सिंपल वे होता है ना, आज हम घर पे भी होते हैं, घर पे नहीं होता, बिकॉज वी ऑल आर इन अ फोन। हम उनसे जुड़े हुए होते हैं जो हमारे से बहुत दूर है, बट हम उनसे बहुत डिस्कनेक्ट हो जाते हैं जो हमारे पास में बैठे हुए होते हैं। तो कहीं ना कहीं ऑफलाइन, आप ऑनलाइन डेफिनेटली इट्स अ वे टू कम्युनिकेट, बट ऑफलाइन भी होना बहुत जरूरी होता है। कभी कभी एक चाय के साथ एक कॉन्वर्सेशन भी बहुत जरूरी हो जाता है। मेक श्योर व्हेनेवर यू गेट टाइम, डू अ गुड कॉन्वर्सेशन। जैसे हम क्रिस्टीना, जब भी मौका मिलता है वी गो फॉर अ चिलिंग। So an offline would really help you to grow. And let me also tell you that very soon Tanveer will be coming up with his own show, Tea with Tanveer, जो उसने already social media में डाल रखे हैं। और सच में आपकी बात सुन के तनवीर जी बहुत बहुत इंस्पिरेशन मिलते हैं, बिकॉज मैं सही मायने में देख चुकी हूँ आप कितने करते हो लोगों के लिए। तो कहीं ना कहीं आपको भी उसमें खुशी मिलती है बोल के आप लोगों के हेल्प करते हो। सो थैंक यू सो मच तनवीर वंस अगेन फॉर कमिंग ऑन दिस शो। थैंक यू क्रिश। वॉइस ऑफ मानवता, मेरे दोस्त जो मुझे देख रहे हैं, मेक श्योर आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, और वॉइस ऑफ मानवता को सब्सक्राइब करें, क्रिस्टीना को सपोर्ट करें, और जितने लोग, हमारी जितनी बहनें आज जुड़ी हैं, इन सबको सपोर्ट करें, और खुद को भी सपोर्ट, और मुझे भी सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, Tanveer. Really pleasure talking to you, and thank you for agreeing and coordinating with me on this particular show. Thank you for doing the creative that you did, the flyers that you made, and you sent it across. So I'm really humbled with your kind of gesture that you have given me, and I'm really touched and honored that I got you as a friend, a true friend. So मेघरा जी, अगर आप हैं सुन सकते हैं तो प्लीज वीडियो ऑन कीजिए। मेघना जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो मेघना जी। So I think Meghna ji is busy. So thank you so much for all those who have joined us today on this live show that we had, and we spoke about some real, we heard some real inspiring stories of individuals, stories of resilience, stories of never giving up. They all a fighter, and yes, you all a fighter. If you want to connect with me,
You have my Facebook link with you. It's Christina Evers. You can send me a request. If you want to connect with me, send me a message. I am there on Instagram as well. वॉइस ऑफ मानवता चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए इस वीडियो पे, ताकि हम अगले एपिसोड के साथ भी आएंगे और आप सबको और भी बड़े हस्तियों के, कुछ अच्छे नामचीन लोगों के, कुछ फेमस लोगों की स्टोरीज बताएंगे उन्हीं की जबानी, ताकि आप सुने कि आज वो सक्सेस के राहों पे कैसे चल रहे हैं। क्योंकि कभी ना कभी तो उनको भी फेलियर मिला है, तो हम सिर्फ सक्सेस के बारे में क्यों बात करें, हम फेलियर के बारे में क्यों बात नहीं करते हैं। ठीक है, हमें चोट लगते हैं, पर उसी चोट से हमें सबक भी सीखने को मिलते हैं कि हमें इस राह पे नहीं चलना है, किसी और राह पे चलना है। तो हम जितना भी हो सके हम प्यार बांटते चले दुनिया में, जितना भी हो सके हम नफरत को कम करते चले दुनिया में। ये जात पात भेदभाव सब चीज को अलग करें। जैसे हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमेशा से एक होकर रहते थे, हर पर्व को एक साथ मनाते थे, वैसे ही हम सब फिर से एक साथ आए, फिर से एक साथ जुड़े और फिर से एक साथ ही इन सब पर्व को मनाएं। क्योंकि ये हमारा जीवन है और हम एक दूसरों को अपने जीवन में सपोर्ट करेंगे तो ही हम आगे बढ़ेंगे, तो ही हम लोगों को इंस्पायर करेंगे। मेघना जी, आज की शो के बारे में आपको क्या बोलना है और वॉइस ऑफ मानवता के बारे में क्या बोलना है? आपका क्या मैसेज है दुनिया के लोगों की तरफ? उसके बाद हम ये कॉल एंड कर देंगे। जी, पहले तो मैं आपका स्पेशल धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया। दूसरी बात, ये मेरा सपना था कि सपने तो मैं बहुत सारे देख रखे हैं, लेकिन इसमें सपना एक मेरा ऐसा था कि मैं जिनको लोगों ने ट्रांसजेंडर कहा है, हिजड़ा कहा है, या मतलब अलग अलग नाम से पुकारा है, उसको हम एक यूनिक जेंडर के नाम से, अब ये भी हम आने वाले वक्त बताएंगे किससे हमने इसको यूनिक जेंडर को अपने बात को लिया है। तो ये मेरा सपना था कि हमें सभी के सभी इक्वल हैं, क्यों हम सबके हार्ड मास सबके जैसे, तो फिर हम अलग अलग नफरत क्यों करते हैं लोगों से। तो ये आज मेरा सपना पूरा हुआ है, इसकी वो भी आपकी वजह से हुआ, और ये 3 साल से मैं लगातार इसको प्रयास में था, तो इसके लिए मैं आपका स्पेशल धन्यवाद करता हूँ। दूसरी बात, ये वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल जो है किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, ये पब्लिक का प्लेटफॉर्म है। इसमें अपने दुखों की बात कर सकते हैं, अगर इसमें सुखों की बात कर सकते हैं, और दिन रात ये वॉइस ऑफ मानवता सच्चाई और ईमानदारी के ऊपर चलने की कोशिश करता है। तो ये मतलब पूरी दुनिया को मैसेज देना चाहता है कि सच्चाई और ईमानदारी से ही दुनिया के अंदर प्यार फैलता है। झूठ और बेईमानी से इंसान के अंदर नफरत फैलती है। तो झूठ और बेईमानी को अपने जीवन से दूर भगाएं और सच्चाई और ईमानदारी को अपने जीवन में अपनाएं, तभी इंसान का जीवन सफल होगा। जब आदमी के अंदर सच होता है और ईमानदारी होती है तो अंदर से उसके गुण ज्ञान निकलता है, और जब इंसान के अंदर बेईमानी और झूठ होती है तो उसके अंदर अवगुण और अज्ञान निकलता है। तो ये अवगुण और अज्ञान से इंसान की जिंदगी नरकमय बन जाती है, और सच्चाई और ईमानदारी से इंसान की जिंदगी स्वर्ग में बन जाती है। स्वर्ग का मतलब ये नहीं है कि आसमान में टपक गए स्वर्ग, अगर वो नहीं है। स्वर्ग का मतलब होता है सच, मतलब सुख ही सुख और प्यार ही प्यार, इसको स्वर्ग कहते हैं। और नरक का मतलब होता है दुख ही दुख और टेंशन ही टेंशन, परेशानियां। तो कृष्णा जी, आपका बहुत स्पेशल दिल से, दिल की गहराइयों से स्पेशल धन्यवाद। आपने भी एक मेरा सपना पूरा किया। एक सपना हमारा, 2-3 सपने और भी हैं कि भारत के लोग खुशी की जिंदगी जिए, नफरत के दाग को त्याग करके। हमने एक शेर भी लिखा है कि लगी है जो चारों तरफ नफरत की आग, उसको हम प्यार की बारिश से बुझाएंगे। नफरतों की दीवारें जो खड़ी हो गई इंसानों के बीच में, उसको हम प्यार के बुलडोजर से गिराएंगे। तो प्यार ही हमारा वॉइस ऑफ मानवता का मतलब, आप समझदार है कि वॉइस ऑफ मानवता का मतलब पूरे विश्व के लोगों की आवाज तो हम उठाते रहेंगे, गरीबों की आवाज, मुझ लोगों की आवाज, क्योंकि ये जिंदे लोगों की आवाज है, और उठाएंगे। थैंक यू, आपका स्पेशल धन्यवाद। थैंक यू आप सभी को एक बार फिर से। और ये मदर्स डे की शाम की स्पेशल सेशन थी, तो आप सभी को बहुत बहुत हैप्पी मदर्स डे, जो कि कल है 8 मई। अपने अपने माँ से प्यार कीजिए जितने कर सकते हैं, दूसरों को, माँ को भी उतना ही रिस्पेक्ट दीजिए। और once again, thank you so much for joining us on this live show. Thank you so much for supporting me and Voice of Manavta TV News channel. This is your channel and this is your show. So if any one of you would like to share your story, you have a story that will impact, that will change and inspire the nation, inspire the world, please get in touch with me.
I will ensure that I have you on one of my shows. Thank you. See you. Good night. Take care. God bless. Stay safe.